Guys, welcome back to my YouTube channel. We finally reached. Oh my god, so there is such a huge backstory to all of this. पहले we were going to some other port. वहाँ से हमने अपना book किया सब कुछ. But then we got late, so we missed it. And then we had to go to another port. And वहाँ पे we waited for like half an hour. खड़े थे हम लोग. And then finally we reached right now after like 3 hours of delay. I am excited for this. And backstory, if you're not following me on Insta, that कल रात को ही मेरा farewell था. So I've slept for like 2 hours before I got to know that we have to come here in Alibag. So this was a very sudden plan, but I'm looking forward to it. A good weekend getaway is all I needed. Imagine the sunset. Wow, I'm actually in love with this place already, and we are planning few things to do tonight. So yeah, and then finally when I get back home, it's all back to studying क्योंकि फिर Feb में boards है. So let's utilize as much as time as I can over here and have a lot of fun together. Okay, so I quickly changed into this cute little sweatshirt क्योंकि यहाँ पे थोड़ा pleasant weather है. And मुझे पता नहीं farewell में मैंने क्या चिल्लाया इतना जो मेरा गला बैठ चुका है. So yeah, that's that. And let's start doing a little bit of makeup because I am not feeling like not doing makeup. I am feeling like doing makeup. So let's do it. Like, I'm not just gonna bore you all makeup karte time, so we are going to yap. I'm gonna tell you guys about my experience farewell ka, and I'm gonna attach a video also where I randomly performed for like 40-45 seconds or something. बहुत ही इम्प्रॉम्प्ट था, नथिंग प्लान्ड, नो कोरियोग्राफी, नथिंग, सो नो जजमेंट्स. बट मुझे तो बहुत मज़ा आया ऑनेस्टली. आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि स्कूल वाले इतना अच्छा करेंगे फेयरवेल बिकॉज आई थिंक सबको यही पता है कि स्कूल वाले इतना नहीं करेंगे. बट इट वॉज बेटर देन आई वाज एक्सपेक्टिंग एट लीस्ट. सो फर्स्ट स्टेप मॉइस्चराइज़र. एंड भाई मतलब प्री बोर्ड्स कुड हैव गॉन वर्स बट बहुत अच्छे गए, टच वुड. एंड आई कॉन्ट वेट फॉर बोर्ड्स टू गेट ओवर क्योंकि उसके बाद तो मौज मस्ती है. ऑनेस्टली मुझे इतना मज़ा इसलिए आ रहा है बिकॉज वी आर हियर विद आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड हम सब लोग बहुत मज़ा करने वाले हैं. प्लस द फ्रीकिंग व्यू ब्रो, एंड लाइक आई गेट अ रूम ऑल बाय माई सेल्फ विथ दिस व्यू इज़ समथिंग दैट आई वॉज डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग फॉर. Camera adjust करना is so freaking difficult when you're vlogging bro, especially without a tripod. This is again a very unexpected vlog. I was not at all planning to vlog, but I think कि जब मैं plan नहीं करती हूँ तब better vlogs बनते हैं मुझसे. Maybe I'm just built that way, I don't know. Okay, foundation. I swear I love Sephora so much. The lipstick shades are on top. मतलब I am so smart that I started yapping without even turning on the lights for the vlog. Perfect. Okay, so now coming to one of the questions that मुझे बहुत बार पूछा गया recently कि मेरा podcast का comeback कब होने वाला है. Please guys, do not expect me to work that hard before boards end because podcasting is not easy. And for me it is easy because I can prepare everything on the spot. बट बोर्ड्स के टाइम तो ऑब्वियसली पेरेंट्स भी स्ट्रेस्ड आउट होंगे, मैं खुद स्ट्रेस्ड आउट होंगी. सो आई एम नॉट गोना मेक अ पॉडकास्ट कम बैक until my boards end.
सो डोंट वरी, ये साल मैं करूँगी कम बैक, बट मे बी आफ्टर मार्च और समथिंग. I am sorry that you guys have to wait for so long, but good things are sometimes late, and that's why I'm always late. Whether it's parties, whether it's function, whether it's anything. I don't know, man, but I just feel so in my solitude right now. Like, wow, I am in love with how I've come so far, because obviously it takes a lot to just be here. So thank you guys for all the support and love. I am actually so grateful right now. एक तो I don't know what this new obsession I have with lip balms, but I am not able to live without it because my lips are getting so dry. Is this happening with everybody, or are my lips not normal anymore? Because it doesn't feel like they're normal. In love with the earrings though. Like, now we're using eyeshadow and blush ka palette by Mars. I'm so obsessed with their palette because, bro, do you see that? And we're almost done, but can you all complete your makeup without a good lipstick shade? I can't. Makeup is done, you all, and I'm gonna skip the mascara because ज़रूरत तो नहीं लग रही मुझे. Now let me show you all the makeup. So that is the makeup, and it's hitting. It is very good, and I actually like it because it's very subtle and the lipstick is the highlight, which it should be. Now I'm gonna click some pictures क्योंकि मैं Insta पे काफ़ी dead हूँ because my pre-boards were going on. But now that pre-boards are over, school is over, farewell is over, and just boards are left, which is the main part of 10th. But anyways, at least कुछ तो ख़त्म हुआ. So we are gonna celebrate that, even though I should be studying right now at home. But इतनी nerdy तो मैं हूँ नहीं, and weekend should be weekending. So we are gonna click pictures for you guys. This open hair Naisha और ponytail Naisha, because my mom is so tired कि मैं हमेशा अपने बाल खुले रख के घूमती रहती हूँ. Like literally in the boat or whatever you call that, उसमें भी मेरे बाल खुले थे. And she's so tired of me not tying my hair. But isn't that what girls love, like opening their hair? Because we're gonna call my photographer मम्मी, क्योंकि अगर आप लोग मेरे content को पसंद करते हो तो फिर आप मेरी मम्मी को पसंद करते हो, because she's the one who does everything. Trust me, she's the most hardworking person ever. मम्मी, अगर आप ये देख रहे हो, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, so please, yeah, appreciate that. Hello मम्मी, please come in. I want you to take my pictures. Let's meet मम्मी. So मैं इनको बहुत पकाने वाली हूँ because पकाना मेरा काम है. Right, पकाने का काम है. Please do not agree to that on public. But anyways, I know you guys love me and I know she loves me and I love her too and I love you guys too. So anyways, let's click pictures. Naisha is back to bed rotting, guys, because she is barely sleeping nowadays क्योंकि अभी pre-boards ख़त्म हुए हैं. And as I said, farewell के बाद मुझे बिल्कुल भी sleep barely कुछ मिली है क्योंकि हमारा ये plan बन गया आने का. So she is very tired, but she will not sleep. She will bed rot. She will scroll on Instagram until she gets tired and eventually goes down to spend time with others because socializing is also important. But I know कि आप लोग भी bed rot करते हो, तो मुझे comment section में please अपने आप को बहुत innocent मत बनाना क्योंकि मेरी मम्मी पढ़ती है. हा हा हा. And she should know I'm not the only bad one out there. Okay, so I just changed into this stripes fitted top. क्योंकि I am honestly loving the way my makeup is looking right now, the way my hair is looking right now, the way I'm feeling right now. And ये बहुत often नहीं होता क्योंकि if you guys know me that well, you guys do know that I have a lot of mood swings and मुझे हमेशा ऐसा social media के लिए करना कुछ अच्छा लगता नहीं इतना. But today I'm in the mood, so let's utilize that because it's not every day that you'll see this, Naisha. Someone needs to help me stop क्योंकि It's been 30 minutes and फेयरवेल के बाद का वो डांस वाला नशा शायद उतरा नहीं अभी तक क्योंकि आई वाज लिटरली प्लेइंग सॉन्ग्स एंड डांसिंग अराउंड एंड मैंने बहुत अच्छा रील भी बनाया है आउटफिट में. सो आई एम लाइकिंग द वाइब एंड या मूड इज़ ग्रेट, हेयर लुक्स ग्रेट. बट मुझे पता नहीं कि हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू स्विम क्योंकि इट्स बिन एजेस मैं स्विमिंग गई एंड आई जस्ट वांट
relax and detox for the day. So yeah, next what we're gonna do is swim. Bring it over to my place. You don't know what you do. Eat to me. You body like speaks to me. Okay, enough beauty shots. Yes, अब हम इसमें डुबकी मारने वाले guys. Come on guys! Woo! बहुत ज़्यादा ही ठंडा पानी है apparently. I don't know if I'm gonna survive guys. But अगर वो बच्ची कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. Okay, so while I remove my makeup, I know कि ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है clearly, but हम लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना ही भूल गए. Not because हमें पता नहीं था कि हम स्विम करने वाले, बट बिकॉज वी वर टू लेजी कि हम कबर्ड में एकदम ढूंढ ढांड के वो एक कॉस्ट्यूम निकाले. एंड आफ्टर ऑल थोड़ा क्रेजी होना तो बनता है इफ़ यू आर विथ योर फैमिली ऑन अ वेकेशन. सो या, नाउ लेट्स स्टार्ट रिमूविंग मेकअप एंड देन डुबकी मारने चलते हैं. आई लिटरली जस्ट नो अंडर वाटर. आई डोंट इवन नो इफ दैट मेक्स सेंस टू यू गाइज, बट इट इज़ ट्रू. मतलब yeah, it just is. I know I'm weird, but that's how I'm built, and I know you guys still love me, so no problem in that. But anyways, I can do underwater, but मुझे पानी पे ऐसा float करना आता नहीं है जब मैं underwater नहीं हूँ, which is weird again. And I know makeup cotton pad से निकालते हैं, but I just feel like removing it हाथ से. No, I'm lying. I forgot to bring the cotton pads. एक तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि मेरी फ़ोन की बैटरी हर 10 मिनट में 15% पे कैसे आ जाती है. एंड देन आई रियलाइज़ कि आई हैव बीन यूजिंग इट द एंटायर डे, एंड ऑब्वियसली बैटरी जाना इज़ वैलिड. मैं अपने फ़ोन को पता नहीं कौन सा जादूगर समझ के बैठी थी. ओके, आई थिंक जितना निकालना था उतना तो निकल चुका है. बाकी तो स्विमिंग पूल में अपने आप निकल ही जाएगा. आई नो दैट इज़ नॉट सपोज टू बी माई लॉजिक, बट इट जस्ट इज़. Okay, now that we are all done, let's just go and let's detox for the day. मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा chill कर रही है guys. I think I need to learn from her. Don't you think? Hello? What is that reaction? Guys, actually I think I'm gonna skip this pool session क्योंकि पानी में पैर डाल के मैं freeze हो चुकी हूँ literally. नहीं, मैं लेके आया हूँ. इसमें भी लाई थी. मैं तो टावल लपेट के आया. हाँ, ये तो टावल लपेट के आया था बराबर. बड़े बड़े टावल ना मैं मुझे इसको हाथ में लाइट. तो वाइब. सो गाइस, जो मैं इतना एक्साइटेड होके गई थी कि वाह स्विमिंग जाएंगे, स्विमिंग आफ्टर एजेस, ब्ला ब्ला ब्ला, वो प्लान तो फेल हो गया क्योंकि पानी इज़ वेरी वेरी ठंडा. एंड एज आई सेड, मेरा गला ऑलरेडी बैठा हुआ है. सो आई डोंट वांट टू रिस्क माई सेल्फ मोर एंड मोर टू द पॉइंट वेयर मैं अगले वीक पूरे टाइम घर पे पड़ी रहूँ क्योंकि आई ऑब्वियसली नीड टू स्टडी. सो वी आर गोना लिसन टू म्यूजिक एंड चिल. सो मेरे को चाय बनाना आता तो है नहीं, बट जस्ट फॉर द व्लॉग, जस्ट लाइक पीपल से जस्ट फॉर द ग्राम, चाय बन रही है गाइस क्योंकि हमारे माता पिता को चाय के बिना जमता नहीं है अपेरेंटली. इंडियन फैमिलीज, अगेन इंडियन फैमिली थिंग्स. द वाइब्स आर वाइबिंग y'all. So apparently the paneer that we ordered was very frozen or whatever. So dad is trying to do some experiment by microwaving it and then putting it on pan, or I don't know what he's doing guys, but I'm really damn hungry, so I hope whatever he does is successful. Hi guys, so we just took a break from playing Sequence and Uno because just ऐसे क्योंकि continuously नहीं खेलना था. But the vibe is really nice. It's really peaceful here and it feels different, and I really needed this, I think. So that's what I can say. And yeah, I just came out for a walk क्योंकि I love walking. Like I can walk 2-3 घंटा without stopping if I have music or if I have someone who is nice to talk to. So yeah, that's the vibe. And कल सुबह उठेंगे,
and then let's see, maybe we are going to a beach to spend the day because पूरा दिन यहाँ पे बैठ के क्या ही करेंगे. So yeah, I am looking forward to tomorrow and I'm grateful for today. बस बाकी तो कुछ है नहीं आप लोग को बोलने के लिए. So let's see what we do next. Dinner तो हमने order कर दिया and I've ordered coffee, hot coffee for myself क्योंकि as I said मेरा गला ख़राब है. I know that you guys know I only drink cold coffee, but मम्मी पकड़ के मारेगी अगर मैंने अभी cold पिया तो. So coffee always. Okay, so my dad is playing TT. Whoops. आप लोगों को खेलना आता भी है? आता ही है ना. नहीं मुझे नहीं. Whoops. I don't think TT is meant for you guys. Literally. What is that? Oh my god. I look so dead and sleepy. I have no idea where they're getting the energy to play cricket at 12 a.m. after traveling so much. Like, इतना तो मैं नहीं कर सकती भाई. I'm gonna chill by the pool. कित्थे दुनिया पता कोई ना. Okay guys, so I finally give up on the socializing part of my day and bus ho gaya actually. Hi guys, it's around 12:45 1-ish and my throat is actually dead, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती. And आज का दिन आप लोग ने देख ही लिया है कैसा गया. So I don't need words to describe it. It was so good and peaceful and that's exactly what I needed. So yeah, I hope कि मैं कल vlog करूँ. Insta stories पे I'm obviously updating all of this, so check that out if you haven't. And thank you so much for watching this vlog. I hope you guys liked it. Hopefully I do make a part 2, so if I do, stay tuned for that. And yeah, please hope and wish me luck for my boards and hope that it goes well for me. And love you guys. Good night.